वापस 2D geometry का चलो so Arush, we have circle C1. We'll have to assume yeah Z as x plus iy. So x plus iy into x minus iy plus a bar into x plus iy plus a into x minus iy plus c is equal to 0. So we will get x yeah square plus y square plus x कॉमन लेके a बार प्लस a, hmm. y और I कॉमन लेके a बार minus a बार plus minus c equal to 0. So you have not yet done coordinate geometry, so you might not know this, but मैं अभी बता रहा हूँ. And I think we were discussing something where I told you how to identify the center and radius of a circle. तो सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, वेर जी एंड एफ आर कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स. yeah एंड दिस रेडियस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक hmm. है, दिस इज द फॉर्मूला. सो over here the center is going to be negative g and negative f, which means it is negative of a bar plus a by 2 and negative of a bar minus a by 2. This is the center of the circle. Are you following this, Arush? so by 2 cube By 2 इसलिए क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उस स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2gx प्लस 2fy प्लस c. उसमें 2 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो फॉर सेंटर वी ऑलवेज डिवाइड बाय 2. okay yeah And radius will be g square plus f square minus c. See, when we square this and add, थोड़ा स्मार्ट वर्क करता है, तो इसका आंसर ऐड करने पे आएगा 2 टाइम्स a bar square plus a square hmm. upon 4. Check this. Are you following this? Minus yeah c. Then shall we proceed? hmm. yes sir. एक second